of IMSCON Bhopal. A big thank you to all of you for giving us this opportunity to present Moot Court. So, for this, I would like to invite Dr. Ujjwala Kedare, Madam, to throw some light on Moot Court. She is, as we all know, I think she doesn't need any introduction. She is the immediate past president of Menopause Society of Nagpur. And she's also the director, producer, leader, scriptwriter, actor, and our judge sahiba. So I invite Dr. Ujjwala Kedare. It's working? Yeah. Good evening, ladies and gentlemen. Respected seniors, chairpersons, and one and all present here. First and foremost, I would like to extend my heartfelt gratitude to Dr. Shashi Srivastava Madam and her organizing team for giving me this opportunity to showcase my moot court. It has been a very long journey. This is my 15th show, and till date, we have presented more than 45 cases. It was 2018 when I first presented my moot court at NARCHICON Nagpur chapter. It is a national conference and gold coin at the hands of Dr. Don as a token of love and appreciation. And thereafter, immediately after 3 months, we had been invited to present moot court at International Hysteroscopic Conference. It was also a very big hit. The foreign faculties couldn't resist themselves coming on stage and standing behind the witness box after the show was over. Then thereafter, again we presented moot court in NARCHICON 2022. Then again we are very much thankful to Indian Menopause Society for repeatedly inviting and giving us the platform to showcase our moot court, as we presented moot court in 2019 at IMSCON at Kolkata, 2020 at Bangalore, then 2022 at Vadodara, then in 2023 at Calicut, then again at West Zone Conference of IMSCON at Surat 2023. Even we had been invited, that means we have presented this way. Even we have been invited to present moot court by AICOG in 2020 at Lucknow. Then 10th show was at ICOG with Foxy International Academic Exchange Committee. Then again at 67th AICOG at Mumbai in 2025. Even we have presented moot court online. Friends, we were very skeptical to how to showcase our talent and our emotions through the mobile and a laptop. But when presented, it was very much appreciated it was attended by Dr. Dilip Warke, Dr. Mane and Dr. Pardesia sir. Dr. Dilip Warke told me, "You write so well, Ujjwala, why don't you write Trinanki Natak and invite me to enact into it?" Thank you, Warke sir. Then we presented moot court at Medical Legal Collegium at Nagpur in 2022. The 14th show was in November 2023 at Chandrapur Menopause, Chandrapur OBGY Society. Then we have been also invited in so many places, but we couldn't make it because it is difficult for me to take a team and to go there. Ladies and gentlemen, you all know that since the implementation and introduction of Consumer Protection Act in 1986, the doctors have to be on their toes. For ladies patient, for female patient, our society is very sentimental and emotional. So if anything goes wrong with it during treatment or after treatment, they frame the charges of medical negligence and at times of corruption. That means the OBGY are exposed to professional hazard more than the other faculties. And doctors have to be on their toes. So if you want to prevent litigation, you have to attend my moot court, as well as you have to put your soul and go study more the medical legal things. You should take your self-interest in making statement and studying a bit. The moot court is an attempt to help and guide the OBGY to impart knowledge regarding various medical legal issues, as well as the dramatization of the cases will help you in learning with fun and getting good take-home messages. Thank you.
So as ma'am rightly said, moot court is actually a simulated court proceedings that is commonly used in legal education by law students where they argue hypothetical cases. This helps them to develop their own drafting and oral advocacy skills. But our purpose in presenting is not only to educate but also to entertain so that everybody gets knowledge with some fun as well. And at the outset, I want to clarify that all the cases that have been chosen are actually real medico-legal cases that have happened in reality. And the decisions have been given in different forums or court all over the country, though we have changed the names for maintaining confidentiality. If the moot court proceedings differ from actual court proceedings, this is due to the fact that we have dramatized them to make it more entertaining for all of you. We may have added a few puns and jokes targeting the local language. The intention is definitely not to insult, but to entertain and emphasize the diversity of Indian languages and culture. So today we are going to present one of these cases, and after we finish the case, it is open for discussion and expert comments and audience interaction. So I'll be reading the case. This is a case of the decision of West Bengal State Consumer Dispute Redressal Committee, Kolkata, dated 27th of February 2006, in the case of Shri Deepak Kumar Neogi and another versus Dr. Birinder Nath Das and another, 2006, 3/CPR 30. Order. कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाए. Thank you, Your Honor. मेरी क्लाइंट मिस्टर रस्तोगी की मरहूम पत्नी मिसेस रस्तोगी की कहानी है. मिसेस रस्तोगी को पेट में काफ़ी दर्द होता था. इसी के लिए वो कंसल्ट करने के लिए डॉक्टर नीलम दास के यहाँ गई ऑन 4th of Jan 2003. डॉक्टर नीलम दास consulted and asked her to get operated for hysterectomy through laparoscopic route. That is removal of her uterus through laparoscopy. Patient was operated for laparoscopic hysterectomy on 6th of Jan 2003. But what? To her surprise, even after the hysterectomy, the patient had severe pain in abdomen. Mr. Rastogi, husband of the patient, requested Dr. Neelam Das to please pay attention to patient's pain in abdomen, but to her surprise, to the patient's surprise, no attention was paid to patient's trouble. Then on 8th of Jan, Mr. Rastogi was asked to bring blood for blood transfusion. और एक सिग्नेचर भी ली जाती है मिस्टर रस्तोगी की फॉर अ सेकेंड सर्जरी ऑफ द पेशेंट. और बाद में ये भी पता चलता है कि सर्जरी तो पहले ही हो गई विदाउट द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड. पूछने पर मिस्टर रस्तोगी को ये पता चलता है कि ड्यूरिंग लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टोमी देयर वाज अ स्मॉल इंटेस्टिनल परफोरेशन. बिकॉज ऑफ दैट बहुत एब्डोमेन में ब्लीडिंग हुआ, हाइपोटेंशन हुआ, पेशेंट का पीपी नीचे गया. Therefore, there was a second surgery which was to be operated. Then patient was shifted to ICCU. But at last the patient died because of septicemia. Just like my patient, my patient suffered a lot. She has to undergo 2 surgeries, blood transfusion, shifting to ICCU, and at last death because of septicemia. The case is very clear. Dr. Neelam Das is negligent in her operations. अगर उन्होंने अपनी पहली सर्जरी अच्छे से की होती तो ना इंटेस्टिनल परफोरेशन होता, ना बीपी फॉल होता, ना एब्डोमेन में ब्लीडिंग होता, ना सेकेंड सर्जरी करनी पड़ती, और ना ही पेशेंट को आईसीसीयू में शिफ्ट करना पड़ता. इवन द डिस्ट्रिक्ट फोरम हैज हैड डॉक्टर नीलम दास नेग्लिजेंट. डॉक्टर नीलम दास के इस नेग्लिजेंट बिहेवियर के लिए, उनके इस लापरवाही के लिए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. जज साहिबा, बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पेशेंट का काम, डॉक्टर का काम जान बचाना होता है, जान लेना नहीं. इसीलिए मैं आपसे अपील करती हूँ कि मिस्टर रस्तोगी को टुवर्ड्स कंपनसेशन 1 लाख रुपीज मिलना चाहिए एंड टुवर्ड्स कॉस्ट 500 रुपीज मिलना चाहिए. थैंक यू मैडम. ओह, यह वाकई एक बहुत ही दुखद घटना जान पड़ती है. डू यू हैव एनी एविडेंस टू प्रोड्यूस इन कोर्ट? Yes, my lord. I want to present Mr. Rastogi to find out the court.
Okay, go ahead. जज साहिबा, वकील साहिबा, मैं झूठ बोलूंगा? मैंने अपनी पत्नी खोई है जज साहिबा। मैं झूठ बोलकर क्या करूंगा? यहाँ बैठे सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जिस इंसान का सारा परिवार बिखर गया हो, जिसके बच्चे अनाथ हो गए हो, वो झूठ बोलकर क्या करेगा? वकील साहिबा, कोर्ट को बताइए आप। माफी चाहता हूँ। ये सच है जज साहिबा कि मेरी पत्नी के पेट में बहुत दर्द रहता था और इसीलिए मैं उसे डॉक्टर नीलम के पास दिखाने ले गया। पर मुझे क्या पता था कि ये मेरी पत्नी की जान ले लेंगी। इन्होंने मेरी पत्नी की जान ले ली। ये डॉक्टर नहीं हो सकती, आप इन्हें छोड़िएगा नहीं जज साहिबा। वो चिल्लाती रही, तड़पती रही। मेरे रिश्तेदारों ने, सभी ने गिड़गिड़ाकर डॉक्टर नीलम से कहा कि चलिए डॉक्टर साहिबा, देखिए ना, प्लीज चलिए, कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया है, प्लीज चलिए। लेकिन उन्होंने कहा, खामोश, डॉक्टर मैं हूँ या आप, मैंने सब ठीक से किया है, मुझे पता है क्या करना है, आप खामोश रही है। ऐसा कहकर इन्होंने हमारी बात दबा दी। आप इन्हें छोड़िएगा नहीं। ना ही ये उस दिन लापरवाही करती ऑपरेशन के दौरान, और ना ही मेरी पत्नी के आंतड़ियों में छेद होता, और ना ही वो मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली जाती जज साहिबा। अब मैं क्या करूं? आप सब बताइए, मैं क्या करूं जज साहिबा, मैं क्या करूं? मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, आप इन्हें इनकी सजा जरूर दीजिए। और मेरी पत्नी तो अब वापस नहीं आएगी, लेकिन कह देता हूँ डॉक्टर नीलम से मैं भरपाई लेके रहूंगा। मैं डॉक्टर नीलम से पूरी भरपाई लेके रहूंगा। Defense, any cross-examination? No questions, my lord. Prosecution, do you have any other evidence? The circumstances in which the patient has died raises enough scope for doubt that something went wrong during the operation as well as in post-operative care. Now, what do you have to say, defense, about this case? थैंक यू, माय ऑनर। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी डॉक्टर नीलम ने इस पेशेंट की पूरी केयर की है, इसका ऑपरेशन किया है, टाइम पे उसे ट्रीटमेंट दिया है। और रहा सवाल इंटेस्टिनल परफोरेशन होने का, इनफैक्ट आई फील ये इंसिडेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए, इसे डिटेक्ट करने के लिए हमारे डॉक्टर नीलम ने कोई भी काम करने से पीछे नहीं हटी है। Do you want to produce any evidence in the court? Yes, I want Dr. Neelam to be present. Okay, go ahead. डॉक्टर नीलम हाजिर हो। I'll speak the truth and only the truth. जज मैडम, लॉयर मैडम, मैंने कोई लापरवाही नहीं की है। मेरे ऊपर लगाए हुए सारे इल्ज़ाम झूठ है। सच तो ये है कि आई डिड माई बेस्ट एज पर माई नॉलेज एंड माई स्किल्स टू सेव द लाइफ ऑफ माई पेशेंट। Objection, Your Honor. Objection sustained. Go ahead. डॉक्टर नीलम दास, आप झूठ बोल रही हैं। You didn't attend the patient when patient had severe pain in abdomen after the surgery. नहीं, ये सच नहीं है। In fact, when I had gone on the second day for taking rounds after the operation, the patient had complained of some pain. I had prescribed her some painkillers. In fact, such type of pain is quite common after a surgery on the second post-operative day. After the first surgery, there was intestinal perforation. अगर आपने perforation जल्दी नोटिस किया होता, आपने जल्दी डिटेक्ट किया होता और सर्जरी जल्दी की होती, तो ना ही पेशेंट का बीपी फॉल होता, ना ही पेट में ब्लीडिंग होता, ना ही पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता, ना ही आईसीयू में शिफ्ट होता।
और ना ही पेशेंट की जान जाती जज साहिबा। योर ऑनर, ये सच नहीं है। जब मैंने सेकेंड डे राउंड लिया था, द पेशेंट वॉज एक्चुअली मच बेटर, बट सडनली व्हेन हर ब्लड प्रेशर फेल, I suspected that there might be some internal bleeding or some injury. I immediately arranged for blood transfusion, and along with the help of my surgeon friend, I arranged for immediate surgery to check what is the reason. I also started her on higher antibiotics. In fact, in such small perforations, the symptoms take time to develop. It may take almost 36 to 48 hours before the patients can show symptoms of sepsis. Do you think कि second operation करना ज़रूरी था? Yes, to find out the cause of the fallen BP and to save the life of the patient, it was very mandatory. ऑब्जेक्शन में लॉ। ऑब्जेक्शन सस्टेन। अगर सेकंड सर्जरी सेकंड ऑपरेशन करना इतना ही ज़रूरी था तो मेरे काबिल दोस्त आपके क्लाइंट ने पेशेंट के हस्बैंड के लिए रुकना ज़रूरी नहीं समझा? ये सच नहीं है। इनफैक्ट मैंने हस्बैंड और रिलेटिव्स को पहले ही इन्फॉर्मेशन भेजा था कि सर्जरी करना पड़ेगा, एंड आई वेटेड फॉर देम। उस दिन 8 जनवरी को मैं 1 बजे तक रुकी थी, बट नोबडी टर्न्ड अप। मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं बचा था। टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट मुझे इमरजेंसी में सर्जरी करना पड़ा। योर ऑनर, मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की। आई अप्लाइड ऑल माई स्किल्स एंड आई ट्राइड टू डिटेक्ट द कॉम्प्लिकेशन एंड मॉडिफाई इट, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल माई एफर्ट्स, आई लॉस्ट माई पेशेंट। योर ऑनर, आई लॉस्ट माई पेशेंट। Do you have any other evidence to produce in court? I want to call Dr. Riddhima. डॉक्टर रिदिम, रिद्धिमा हाजिर हो। I will speak only the truth. डॉक्टर रिद्धिमा, क्या आपको 8 जनवरी 2003 में डॉक्टर के यहाँ बुलाया गया था इमरजेंसी सर्जरी के लिए? Yes, ma'am, I remember that. What happened? So, Mr. Rastogi's wife, Mrs. Rastogi, had a bowel injury, and for that repair, Dr. Neelam had called me. फिर आपने आके क्या किया? I had re-explored that patient. I saw a small perforation. I closed that perforation. I remember I also sucked out the bilious content. But in spite of the second surgery, because the patient's condition was still unsatisfactory, the patient had to be shifted to ICCU and had to be put on ventilator. So, in your opinion, how much time does it take to detect intestinal obstruction? Of course, it takes time. As per the latest edition of Textbook of Surgery by Love and Belly, it is clearly mentioned that any injury which is more than a minor laceration, for example, a puncture injury by Vire's needle which occurred at the time of laparoscopy, will usually take 48 to 72 hours to present. Here, हमारे डॉक्टर नीलम ने पेशेंट का ट्रीटमेंट करने में कोई भी नेग्लिजेंस नहीं किया है. She treated the patient well. She identified the perforation and she took the patient for surgery to save her life. Unfortunately, patient could not be saved. That's all on her. I rest here. दोनों पक्षों के गवाहों को सुनने और समझने के बाद, साथ ही आफ्टर स्टडिंग द written notes of arguments filed by both sides and analyzing the whole situation, the court has found that it is a fact that the intestine was perforated while executing the first operation. But when the same was suspected and the same was tried to combat the situation, the surgeon did everything and they attended the patient. The detection of perforation was after some 36 hours, but there is nothing on record to show that it happened due to willful negligence of attending operating surgeon. In such circumstances, we don't think it is proper to hold the attending surgeon
responsible for negligence in terms of Section 2(1) of Consumer Protection Act 1986. In this context, it will be relevant to refer to the decision of Honorable Supreme Court that a simple lack of care, an error of judgment, or an accident is not a proof of medical negligence so long as a doctor follows the practice acceptable to the medical profession. इसका मतलब ये है कि सिर्फ इसलिए कि पेशेंट की जान चली गई या एक्सीडेंट्स हो गए, इसके लिए हम किसी डॉक्टर को कोर्ट निग्लिजेंस साबित नहीं कर देता जब तक कि यह तय ना हो जाए थ्रू एविडेंसेस कि हाँ निग्लिजेंस हुआ है. सिंपल लैक ऑफ केयर डजंट मीन कि निग्लिजेंस है. और साथ ही यदि उसने जो भी प्रोफेशन में एक्सेप्टेबल रिकमेंडेशंस है उसको फॉलो किए तो वो मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं माना जाएगा. A doctor cannot be held liable for negligence merely because a better course or measure of treatment was available, or simply because a more skillful doctor would have not followed or restored to that practice or procedure which the accused followed. हो सकता है उस समय कोई बहुत हाईली स्किल्ड सर्जन रहा होता तो शायद उसने कुछ दूसरा प्रोसीजर अपनाया होता, पर फिर भी इस डॉक्टर ने कॉम्पिटेंट सर्जन यदि को अपने हिसाब से भी पेशेंट को ट्रीट करता है लेकिन फिर भी अनटाइमली अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है तो कोर्ट डॉक्टर को निग्लिजेंट नहीं पकड़ता. Whether doctor was negligent or not, the standard for judging him would be that of an ordinary competent person exercising ordinary skill in that profession. So the court decides that Dr. Neelam is not negligent and the case is dismissed. Now we are coming to the most important part of the moot court, that is take-home message. The Indian courts have developed the principle of reasonable care as the standard for the medical practitioner to adhere to when providing medical treatment to the patient. The law doesn't prescribe the very limits of very high standard to be followed, but the minimum lowest standard below a patient cannot be dealt with. Now, what does it mean by reasonable care? It means when the care, skill and diligence are exercised in a best possible way and in the best capacity of the doctor, then it will be considered as reasonable care. If a doctor is exercising a reasonable degree of care, he or she will not be held negligent. इसका मतलब यही है कि कोर्ट यूजुअली डॉक्टर के फेवर में बातें करता है. बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता. नॉर्मल मिनिमम स्टैंडर्ड आपने एक्सिक्यूट करना है पेशेंट के ट्रीटमेंट के दौरान. उसके नीचे यदि आप जाते हैं देन येस यू विल बी हेल्ड नेग्लिजेंट. If a doctor is exercising a reasonable degree of care, he will not be held negligent. पर negligence को judge कैसे किया जाएगा? In a given time, the negligence is judged by Bolam test. A man need not possess the very highest skill. It is sufficient that a doctor exercises the ordinary skill of an ordinary, competent man in that profession. But in future, the doctors are to uphold and advocate effectively for the legal rights of the patient. आप ignorant रह के नहीं हो सकते. आपको legal right आपके भी समझने हैं और patient के भी. They must have a sound grasp of law and the confidence to apply the understanding. इसके साथ ही कोर्ट की कार्रवाई अगले केस की सुनवाई तक रद्द की जाती है. Thank you. Thank you so much. I would just like to put in a brief introduction, Patra Parichaya. As you all know, Dr. Ujjwala Kedare in the role of Judge Sahiba. Our Judge Sahiba is well-read, confident and तलवार की जैसे तेज़ है. इनकी जानकारी इतनी गहरी है कि गूगल भी पूछ लेता है कि सोर्स कहाँ है, प्लीज़ बताइए. आज हमारे साथ डॉक्टर प्राजक्ता बर्डे could not come due to some family emergency, so her place was taken by Dr. Pragati Khadatkar. Dr. Pragati played the role of the defense lawyer. And प्रगति का क्या कहना, उनको हम बोलते हैं she has a PhD in communication.
मनाने वाली, समझाने वाली, हर हाल में केस को बचाने वाली. So a big round of applause for Dr. Pragati Khadatkar. I am Dr. Shantala Bhole and I played the role of the confidence and intense gynecologist, भावनाओं की तूफान और always आवाज़ में ज्ञान. That is me, Shantala. In the role of the brilliant, earnest and academically top-class surgeon, Dr. Bhakti Gurjar, उनका मिसाल और उनका डेडिकेशन का क्या कहना है. वो एक जीती जागती मिसाल है. So Dr. Sahiba, you did a wonderful job today. शिवांगी तो है हमारी ड्रामा की रानी. आज से निभा रही है वो पति का बहुत अच्छे से निभाया उसने पति का किरदार. और यकीन मानिए इनकी अदाकारी ऐसी है कि असली पति भी कंफ्यूज हो जाए. सो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सुपर टैलेंटेड शिवांगी. और अब ज़रा संभाल कर बैठिए हमारे प्रोसिक्यूटर जो है ना डॉक्टर वैशाली चांगोले. सख्त, तेज और नियमों की पक्की. इनकी आवाज़ में तो है बहुत दम, पर यू नो व्हाट, दिल में तो वो है पूरा फन. शी इज़ अ फन लविंग पर्सन. सो दिस इज़ डॉक्टर वैशाली चांगोले फॉर यू. So thank you so much for your attention and your patience. This is Team Moot Court for you.